मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग प्रगति। मेरा नाम अंकुश ग्रोवर है। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन। यूजुअली जो मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। Okay, so I'll not be using the mic. I'll be using my vocal cords to connect with you all. So usually जो मेरा ट्रेनिंग का मोटिव रहता है वो ये रहता है कि मेरा इंट्रोडक्शन एक जो थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ इस मैं भारतीयों और भारतीयों से प्यार करता हूँ, इसलिए मैं सब ये बहुत अच्छे से चाहता हूँ कि आप सब अपनी फील्ड में ग्रो करें। एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एज अ बडिंग एंटरप्रेन्योर, आपकी टीम्स ग्रो करें और आप ग्रो करें। तो यूजुअली आज से पहले जो मैं ट्रेनिंग्स लेता था डिजिटल मार्केटिंग पे, गोरिल्ला वॉरफेयर्स पे, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज पे, बट दिस टाइम आई हैव चूजन अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, बिकॉज पिछले 10 साल में या पिछले मैं कहूँ 25 साल में जो मैंने किताबें पढ़ी, तो मुझे लगा उसका एक छोटा सा डोजियर, उसका एक छोटा सा लर्निंग आप सबका शेयर करना चाहिए। तो ये जो 7 बुक्स हैं जो अभी हम आगे आने वाले 25 से 30 मिनट में डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपने पढ़ी हो, क्योंकि एक बुक को अगले 30 मिनट में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है और हम यहाँ पर 7 बुक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आप सबका साथ चाहूंगा, बिकॉज ये मेरी लर्निंग्स है इस बुक से, तो पूरा का पूरा जो मैं श्रेय देना चाहूंगा इनके राइटर्स को देना चाहूंगा सबसे पहले, और पूरा का पूरा जो इसका कंटेंट है वो यहीं से लिया गया, इस बुक से लिया गया, ये मेरा कंटेंट नहीं है। तो एक डिस्क्लेमर शुरू करने से पहले, तो सबसे पहले बुक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी आम जिंदगी में यूजुअली सोचते हैं कि यार एक किताब हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो मैं आप सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। कोई कोई आंसर अगर बताना चाहे, प्रवीण सर प्लीज। करेक्ट। एनीवन एल्स? किताबें क्यों पढ़नी चाहिए? यस, दैट्स परफेक्ट। चलिए मैं एक और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता हूं, हमें बुक्स क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोले। कैन वी हैव क्लैप फॉर मैम? कि अगर हम जहां रहना चाहते हैं अपनी जिंदगी के जिस दौर में, जिस स्टेप पर अगर हम वहीं रहना चाहते हैं, तो हमें बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। और यहां मैं आपको एक बहुत ओपन डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, बुक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किताब ली और उसको रीड किया। आज के इस डिजिटल दौर में यू हैव ऑडियो बुक्स, you have video books, you have actual multiple ways, you know there is a concept called as human books. So आप सब जब बैठे हैं, आप अपने आप में एक किताब है, और एक जो किताब बनी है वो कितने सारे एक्सपीरियंस से बनकर बनी है। तो जब आप एक किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक उस इंसान का, उस राइटर का एक्सपीरियंस नहीं लेते, उसके जिंदगी में जुड़े जितने इंसान थे उन सबका एक्सपीरियंस आप लेते हैं। तो शुरू करेंगे पहली बुक से, और सबसे इंटरेस्टिंग बुक जो मैंने रिसेंटली पढ़ी इज धंधो इन्वेस्टर। कैन वी क्लैप फॉर दिस राइटर, बिकॉज दे हैव डन दिस एफर्ट, नॉट मी। सो ये बात है 17वीं या 18वीं सेंचुरी के आसपास, जब बहुत सारे गुजरातीज वर देयर बेस्ड आउट इन युगांडा। युगांडा एक अफ्रीकन देश है, वहां के वे बहुत समृद्ध बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आप जैसे बन चुके थे। तब वहां के एक एनार्की ने, वहां के एक किंग ने डिसीजन लिया कि ये लोग जो बाहर से आए हैं, मैं इनको यहां नहीं रहने दूंगा, मैं इनको यहां से निकाल दूंगा। तो उस समय पे पटेल्स, जो बहुत प्रोमिनेंट कम्युनिटी है गुजरातीज की, दे मूव टू यूएस। और जब वो यूएस मूव करे तो वहां पर उस टाइम पर एक ऑयल क्राइसिस चल रहा था, जो मिडिल ईस्ट से, क्योंकि हमारा जो मेजरली जो ऑयल वहां पर आता था वो आता था मिडिल ईस्ट से। तो उस टाइम पे क्या हुआ, प्राइसेस ऑफ ऑयल हैज रिजन लाइक एनीथिंग। तो जब यूएस में ऑयल के दाम बढ़ने लग गए, लोगों ने गाड़ी चलानी बंद कर दी, बहुत कम कर दी। लोग, पीपल वर डिपेंडेंट ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसकी वजह से लोगों ने घूमना बंद कर दिया, जिसकी वजह से होटल्स और मोटल्स में लोगों ने रहना बंद कर दिया या कम कर दिया। तो वहां के जो मोटल यूजुअली यूएस में या वेस्ट में एक टर्म यूज होती है जो हाईवे पे होटल्स होते हैं। इंडिया में कॉन्सेप्ट इतना प्रोमिनेंट नहीं है, अभी हो रहा है धीरे धीरे। जब आप मानेसर साइड जाते हैं, हमारा एक प्रगति का ट्रिप भी हुआ था, तो दैट वाज सॉर्ट ऑफ अ मोटल टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड। तो वहां पर मोटल बिजनेस जस्ट केम डाउन टू द अर्थ, खत्म। एट दैट टाइम पटेल्स टुक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। So this book is all about that, Dhandho Investor. I think you all guys should read, but just to give you a summary of that, what are the key learnings from that business? At present, पूरे यूएस में Indian population is less than 1%. And you will be surprised to know this, that more than 50% of Patels, Gujaratis,
own motor business and petrol pump business. एक देश जहां पर इंडियन पॉपुलेशन 1% से कम है और वहां पर एक की बिजनेस, प्रोमिनेंट बिजनेस इज ओन्ड बाय गुजरातीज. So what is that learning we have got from this is, first they did this as low cost business. So I think मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यहां से लर्निंग आप अपने बिजनेसेस पे लगाइए, अपनी टीम्स पे लगाइए, अपनी लाइफ में लगाइए, ताकि आप भी उस सक्सेस को जो उन्होंने प्राप्त की है आप कर सके. So what they did, interestingly, to run this as a low cost business, they called their relatives. हाँ जी भाई, वडोदरा से, गुजरात, अहमदाबाद आ जाओ. वो मोटल में 10 रूम होते थे, 2 उसी रूम में रह लिया. मोटल का ऑपरेशनल कॉस्ट इज लेस, सफाई भी खुद करते थे, बाहर से हायर नहीं करते थे, वहीं रहते थे, वहीं बनाते थे, वहीं खाते थे. तो उसकी वजह से क्या हुआ, उनका जो प्राइस ऑफ रेंटल ऑफ दैट रूम बिकम्स लो, तो आपस में वो कॉम्पीट कर पाते. तो जब तक आपका कॉम्पिटिशन आपसे कम प्राइस में बेचता रहेगा, आपके लिए इट विल बी अ डिफिकल्ट चैलेंज. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू ब्रिंग डाउन द प्राइस टू अ लो लेवल. एंड वो कैसे होगा कि आपके पास जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो आपकी कम होनी चाहिए. So that was the one idea they got it from this. So if you go with few examples in present world, if I give you example of Indigo. Indigo is a low cost airlines and it is topmost airline in India. If you read the history of Indigo, I'll not go in that depth. They started this business with a very less number of airplanes. Now what are they doing, how they are doing, you all know. How they have succeeded. Jet Airways was there, SpiceJet is there, Vistaras of the world, but still Indigo is succeeding. Second example, Google. Pioneer in technology in world. When they start a new project, they just invest 1% in that project. Interestingly, when Google started Google Lens, जो उनका की बिजनेस है उसमें उन्होंने 1% लगाया कि सक्सीड हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो नो प्रॉब्लम. सो दैट लो कॉस्ट एडवांटेज यू हैव टू ब्रिंग इन. You have to bring in that particular function with respect to the intelligence of the pricing so that you can fight with your competitor, be it service industry or be it product. Next, interestingly, there was what they did is head tail. So head tail is nothing but a probability कि आप अपने जो calls ले रहे हैं कितने अनुमानित ले रहे हैं. So what they did, that they took all the loan from banks. So they gave down payment and took all loans. तो बोला कि यार जाएगा तो क्या जाएगा, डाउन पेमेंट जाएगा, बंद नहीं चला तो क्या बंद होगा, डाउन पेमेंट बंद होगा, बट द सक्सेस परसेंटेज इज हाई. So that is a learning from this key book. We will move to the next book because we have to cover 7 books. There are enormous learnings from this book in detail. If you want to read this, please read this. You will learn a lot of things. Can we move to the next one? Yes? Okay. Thank you. So next is an amazing book, Atomic Habits. This is by James Clear. Very, very, very interesting book. हैबिट्स, हमारी आदतें, कैसे हमारी छोटी छोटी आदतें हमें एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती हैं. सो आप सब जैसे हम अपनी फाइनेंशियल टर्म्स में बात करते हैं कंपाउंडिंग, यहां पर आई थिंक सीए, आप सब सीए हैं, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज कंपाउंडिंग इन वेरी वेरी क्रिस्प मैनर. कंपाउंडिंग इज समथिंग लाइक दिस एड्स ऑन टू योर वैल्यू एवरी डे. जैसे अगर सपोज 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से और 365 डेज करते रहे हम, तो क्या हुआ, एट द एंड आंसर आएगा 1. बट अगर 1.01 भी हुआ ना, तो एवरी टाइम यू कंप्यूट कैलकुलेट, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बिकम 2 3 और मतलब इट कैन बिकम अ नंबर ऑफ लाइक product of number. Exactly, it will become 37% annually. So I just wrote the calculation there. So very correctly said, compounding. Usually जब हमें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स सर जैसे आते हैं तो बोलते हैं कि यार SIP में इन्वेस्ट करो, कहते हैं सर. क्यों कहते हैं? बेसिकली बिकॉज दैट वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंडिंग. यू विल नेवर बिकम रिच जस्ट बाय सेविंग. वाउच ऑन दिस. आप पैसा जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए. उसका एक सिंपल प्रिंसिपल है, बिकॉज हमारी जो महंगाई दर है वो हमारी एफडी के रेट से कम है और हमारे जो खर्चे दिन प्रतिदिन हम एक्चुअल में कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं. आज से 10 साल पहले मैं बैचलर था, आज से 5 साल पहले मेरी शादी हुई, आज से 3 साल पहले मेरा बच्चा हुआ. सो दिस कीप्स ऑन गोइंग. माय खर्चे विल ऑलवेज गोज फॉर अ टॉस. सो कंपाउंडिंग इज द फैक्टर विच इज नॉट ओनली एप्लीकेबल इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स बट ऑल्सो विद योर हैबिट्स. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं यहाँ पे सर. दिस इज द कोच ऑफ, नेम ऑफ द कोच इज डेव. सो 100 साल से ना एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी, उसने कोई भी रेस नहीं जीती थी, कुछ भी नहीं. दे वर डिसअपॉइंटेड लाइक हेल.
So Dave was appointed as a coach to them कि यार इस टीम का कुछ करो वरना तो हम बंद कर रहे हैं अपना साइकिलिंग डिपार्टमेंट, बहुत खर्चा कर लिया, 100 साल से कुछ जीते ही नहीं यार ब्रिटिश एरा में. So what Dave worked on a principle of 1% improvement. तो वो रोज 1% इंप्रूवमेंट करता था. फ्रॉम द डेप्थ टिल टायर का साइज क्या होना चाहिए, जो साइकिलर है उसको कपड़े क्या पहनने चाहिए, उसको खाना क्या खाना चाहिए, उसको सोना कब चाहिए, तो रोज 1%. सो दिस एक्चुअली कंपाउंडेड टू whole 365 days, and as a result, this is, you can Google this, the British cycling team won how many golds in the Olympics? 62 golds and 5 two-day fronts consecutively. This can create marvels. So my request to you is, which book this book suggests, that add one simple 1% improvement in your daily life. It can be one good act. I think if you, I'm very fortunate that I have attended one session from Praveen sir, which was destiny. So dictate terms to destiny. Dictate terms to destiny. Sir have told a very beautiful concept of arc. Random act of kindness. So you have to perform one single random act of kindness for yourself as a habit. You have to make it 1% improvement in your daily life so that you can achieve what percent? So you become what? 37% of more of what you are today. If you will not do, you will remain at the same. Sorry. So second thing, I will quickly move fast, that this is the power of identity. So this power of identity is belief system. Very small example. If you are struggling with your health and you say that okay, अब first new year आने वाला है, हमारा जो best resolution वाला है वो क्या होने वाला है? हम जिम जाएंगे. सबने memberships ले ली होगी. This is the best time to sell any gym membership. It will sell like a hotcake. Best time. So what you do in ideal stage, that you see, मुझे fit होना है, I have to go to gym. This is a process. I will become healthy. This is my identity. But ideally, what we should do, what this book suggests, is the reverse. First, you build identity that I am healthy. I have to. This is my part of my lifestyle. This is my life. I'm a millionaire. This is my life. For that, what process I have to do, and then the outcome will follow. Isn't it the beautiful idea? Can you please clap for the writer James Clear, who just suggested in simple words? एक बहुत अच्छी स्टडी हुई वेस्ट में ओल्ड एज लोगों में जो 60 से ऊपर थे, कि आप, बिकॉज जब हम बिकॉज मैं उस दौर में नहीं हूं और आई होप आप सब मेरे से ज्यादा यंग है, कोई भी 60 प्लस, कोई 60 प्लस है यहाँ पे सर? नो वन. सो जो 60 साल से ज्यादा लोगों में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 200 लोगों से पूछा गया कि आप अपनी डेथ को कैसे देखते हैं, बिकॉज नाउ यू आर अप्रोचिंग योर एंड ऑफ दैट विच इज द सच्चाई ऑफ दिस वर्ल्ड. आप अपनी डेथ को कैसे देखते हैं? तो उसमें से काफी लोगों ने बोला हम बहुत पॉजिटिव है, हम बहुत हेल्दी है, हम बहुत अच्छा जीने वाले, हम तो 200 साल जिएंगे. नहीं यार, मैं बूढ़ा हो गया हूं, रिटायर हो गया हूं, हेल्थ साथ नहीं दे रही. तो यू वोंट बिलीव, when they have examined the life expectancy of those positive people raised by 7.6. जो वो पॉजिटिव लोग थे वो 7.5 साल ज्यादा जिए by just this thought. So this is the power of identity. Last principle is Warren Buffett's 525 principle, which is an amazing principle. तो हुआ क्या बेसिकली, आप सबकी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज है. मुझे ये करना है, मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है, मुझे अपना टर्नओवर XCR करना है, मुझे अपने हेल्थ. सो ऑल हैव प्रायोरिटीज इन योर लाइफ. So you prepare a list of 25 top priorities of life. You please do this for your business, for your life, for your wealth. Just circle 5 topmost priorities and focus on that. Scrap 20. This is Warren Buffett's principle. I hope Warren Buffett need no introduction in today's world. If not, please Google it. You will know who Warren Buffett is. This is a real example life. आप 25 प्रायोरिटी मार्क करो, उसमें से 20 स्ट्राइक आउट कर दो, 5 को फोकस करो, 5 को सर्कल करो, एंड जस्ट डू दैट. So, जब उनसे पूछा गया कि सर बाकी 20 का क्या करें, तो उन्होंने बोला कि यार धीरे 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 करेंगे. One of us said no, just focus on 5. 5 आप अचीव कर ले, उसके बाद नेक्स्ट 5. As simple as that. The last is 3 hours of habit forming, because habit बनेगी कैसे? It's very difficult. We do not want to, our mind do not want to kind of go out of our comfort zone. I will talk more about this. This is a very important element कि हम अपने comfort zone को कैसे छोड़े. कौन सी बुक को सजेस्ट करती है? यार सुनने में बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल कैसे करें? बिकॉज 3 हैबिट्स इज रिमाइंडर, रूटीन, रिवॉर्ड. आई थिंक इट नीड्स नो elaboration. Remind yourself, make a routine, and then reward. I'll quickly go to the next because we have to cover 7 here. So next amazing book is Deep Work by Carl Newport. Amazing book.
फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीप वर्क। इन यार आज के ना जो दौर है, आज का जो टाइम है, वी यूजुअली काइंड ऑफ, हमारी टीम्स जो हैं वो यूजुअली बहुत स्ट्रगल करती है क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी में, कि क्वांटिटी अचीव करें या क्वालिटी अचीव करें। कैन यू प्लीज रेज द हैंड्स हु बिलीव दैट क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट? आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं कि आपको लगता है क्वांटिटी ज्यादा अच्छी है या क्वालिटी? क्वांटिटी वाले कितने लोग हैं? क्वांटिटी? नो, यू हैव टू चूज वन. So I'll take a liberty between both. That's correct, both. But first, let's understand what is more important as per you. What is bees? What is 19? Raise your hand for quality. Who says quantity? So 2 books, because that's something I'll not be here, because again every book has a different genre. I totally understand that a lot of things will contradict here. A lot of books will contradict, but every human has a different viewpoint. We have to take the best what suits us. So I really apologize. Yeah, as per the work, as per your needs, as per what your condition says. Because books, I feel, are in open in nature, which can just suggest everything to anyone, and that depends कि आपको कौन सा सूट करता है. As a doctor, you can see that every treatment will not work on every patient. So that is something is a replica in book also. That is, I would say, not clear, but that's how you have to. Correct. Quantity is important. Because if you go with quality, then you will be treating the same patient for the whole day. They will not be able to attend other patients. So deep work says that quality is important over quantity. Because as a leader, as an entrepreneur, as a business owner, if you are not dedicating your time in deep work, probably you are not building something. So what is actually deep work is how you can kind of do deep work. कि मैं बहुत फोकस होकर के कैसे डीप वर्क करूं, कैसे मैं अपने बिजनेस का एक प्लान बनाऊं, कैसे मैं अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करूं, कैसे मैं बिजनेस को थॉट प्रोसेस दूं, मुझे R2Bs किससे करनी है, मुझे क्या बात करनी है. दैट इज व्हाई द डीप वर्क इज इंपॉर्टेंट. Probably for your example, sir, please, I'll take a liberty to share this example. Doctors के पास रोज एक नया केस आता है. Though all of have the equal number of teeth, the type of teeth are similar, but the type of patient is always different. Maybe psychologically, maybe from medical side. For all of you, that's why deep work is important, to analyze that. Okay, how will I treat this patient? How will I treat this, or how will I serve this particular customer? So in your case, because you are into IT systems, though IT systems are same across world. Still after 30 years also, I'm facing every day a new challenge. New challenge. New. Someone says that, no, I want this. No, I want this. No, I want this. Making them explain, you don't know. This is also a deep work theorem. Correct? Hope I'm right. And the writer is also. So, embrace both. So, okay, second, I missed the point. See, I think I'll spend a little more time on this understanding. How our mind is made. हमारा दिमाग बना कैसे है? हमारा दिमाग बना है कंफर्ट जोन में रहने के लिए. Simple. I think you are the best person to explain this, how our mind functions, because you are from this field. That we do not want to kind of take new challenges. Agree or not? We do not want to meet new people. Agree or not? In the room, I'll make 10 people stand. How many of you go just say hi to them? Our mind resists, because that's how our mind works. We have to train them. How will you make this deep work happen is embrace boredom. This is what the author suggests. Take breaks. Meditate. Breaks are super critical, important part of your life. You just cannot go with the same flow, because if you are not taking break, then probably you are not preparing yourself for a deep work. The next one is reduce social media, because what is happening in today's world, we are now made to take quick decisions. हम सबका माइंड आज की डेट में, अगर आप अपने दादाजी या फादर साहब के टाइम की बात याद करेंगे, दे वर एक्चुअली वेरी कॉशियस विद रिस्पेक्ट टू टेकिंग डिसीजंस. घर लेना है, यू जस्ट मेक लाइक, आज की डेट में आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइफ में ऐसे डिसीजन लिए होंगे जो आपको बाद में रियलाइज होगी, शायद अगर मैं रुक जाता तो शायद वो मैं डिसीजन अच्छा कर सकता था. विद शादी इज वन ऑफ द एग्जांपल. करेक्ट सर. Can you have a clap for sir, because that's a right example. Like, if we have examined more people. So correct sir. Sir को नहीं मिला actually. Now sir he realizes. So okay. So what happens with mind is bound to be in your comfort zone. You have to train mind to be out of that and plan. The next is drain the shallow work. This is something I always feel with a lot of entrepreneurs, that they themselves do a very shallow work. बहुत छोटे छोटे काम करते हैं.
recently, maybe I'm biased with this example, this is my personal example. Few of my friends suggested कि नहीं यार driver रख लो, it will cost you 10-15,000 but it will save you a lot of things. When you go for a meeting you can prepare, when you come for a meeting you can prepare. It's nothing to do with your status symbol. But just don't do the shallow work, because traveling in Delhi on your own gadi is useless. And trust me, since last 1 month I'm trying this, and it has, just by 15 paying 15,000, it has increased my productivity. As an entrepreneur, what is important for you? Those 15,000 or time, or to get the time to do deep work? Tell me. In our offices, multiple times, हमारा एक बल्ब खराब हो गया ऑफिस में. Now you are after the life of the whole MST to get that bulb rectified. Don't you think that's a shallow work? Do you think as an entrepreneur you should do? Yes or no? You should do? No. What you have to do is delegate. I hope you all have those people. If not, please build. Then only you will get time to do that deep work. I think one important learning which I got in my life is email writing or message writing or whatever you want to call it as, because every work doesn't work in email format. Just for an example, that should be crisp. अगर आपके क्लाइंट ने आपसे कुछ पूछा है और अगर आप उसको दो चीज एक्स्ट्रा बता देंगे, तो whose time it will kind of be saved? Yours. And plus the delight your customer will get कि नहीं यार मैंने ये पूछा था but I have got a detailed information. So please spend time when you reply or when you send proposal. Think deep. That's the deep work. That's the benefit of deep work. The last is stop being busy. Stop being busy. Stop being busy. Right on this. आपके ऑफिस में सबसे ज्यादा भागा दौड़ी कर रहा है ना, वो सबसे कम प्रोडक्टिव है. उसको पहले बिठा के बोल भाई तो पहले भागना बंद कर. Because a lot of times you are handling employees. Because entrepreneurs cannot work independent. If you are working independent, that's good, but you will be aiming to hire a team. So the person who is most busy, I'm sorry, you have to make him productive. Is it good or bad, guys? Are you with me? Will run a little fast. So it says deep work is rare because shallow work is easier. It takes time and effort to engage in deep work. Self-explanatory. Please don't engage yourself in shallow work. If something can be done by others, please do. Yes, sir, please. Sir, it depends how much time it will take for you to do. That's something also a factor of how much dependent. Let's suppose you have a very important client meeting and the client is just right there and it's all dark, then probably you have to do. But if you're just spending 24 hours to do this, it's something shallow work. So that's critical important function to understand, that changing the bulb is not shallow work. Just behind someone to make that happen, or for 24 hours for people do. Thank you, sir. Thanks. Thank you. So next one is quickly is hard things about hard things. I'll just quickly run through this because this is actually a very fantastic book which tells the hard things. अच्छी अच्छी बातें हर books बताती हैं, but this actually tells a little background. What this book is, it was written by Ben Horowitz. He was a successful entrepreneur, billionaire, sold businesses, made businesses fall, again sold businesses. So he wrote very critical things about businesses that जो कड़वी बातें, who no one will tell you. When you start a journey, 100% most of these things will come across. You have to kind of plan, to do a planned manner, you have to solve this. So what are those quickly 5 things? Unplanned things will happen. Flaws or expenses to fix. Finances will run low. Customers may leave you. Valuable employees may leave you. Quickly, I'll summarize you what this books want to say. Ma'am, how much time we have? We are left with 10 minutes. Okay. So what it book says is that you have, if you are running a business, just be prepared about that things will become unplanned. You just cannot kind of say that, okay, I have not planned this. Sorry. Customers may leave you. Sorry. Employees may leave you. Sorry. But answer to each of these things is not sorry. The moment you start, you have to analyze that, okay, I have to be prepared for this. Please read this book, because this book also tells how to do all these things, how to plan all these things, or how the author did that. Small dojo about this. Let's take a pause. Let's just take a quick 20 seconds recap or a pre-cap so that we all are on the same page. Obsess and work. So be relax in your life, spend time at the edges, try new challenges, do deep work. Train all your effort and recover effortlessly. Because balance doesn't protect you, it limits you.
सो अभी तक आप मेरे साथ हैं? यस और नो? वॉल्यूम we can move to the next one because so अभी आप मेरे साथ हैं? Any questions अभी तक? कोई questions? How we can get this book is I think Amazon is the right answer, and any other learnings we can have. Vipin, you have a question? So I'll send you, because that's just a summary. That's a summary of what we did, because I'm not connected to the audio. I'll send you the video. Even you get the slide also. So that's not a problem for me. So the next book is Nudge. This is one of the amazing books you will ever read. This has been written by Thaler and Sustain. Thaler is actually a Nobel laureate. He got Nobel Prize in the field of behavioral economics. So आज आपको समझना पड़ेगा, आप जो भी डिसीजन लेते हैं is actually a factor of your behavior. Because most of the decisions which you feel जो आपने आज से 10 साल पहले लिए थे can be right or wrong is based on your behavior. So what happens in your usual life, जो आप अपना decision लेते हैं वो किसके basis पे लेते हैं, is actually this book tells you. So what they say, people buy more than they really need. Best example, आप grocery shopping के लिए जाते होंगे मॉल में, आप let us suppose Reliance Mart गए या फिर Spar गए. So at the time of checkout, what do you find? You find a deals, you find chocolates, you find something to buy in a hurry. So that actually gives you a point to buy more. So how you have to enable this for your customers. So actually this book Nudge tells you. Nudge, what is the meaning of nudge? Nudge actually came from a theory of calling as parental liberalism. Liberal means free. Parental means, if you see the picture, it actually depicts very beautiful that एक हाथी अपने छोटे बच्चे को push कर रहा है, nudge कर रहा है. So actually you have to nudge your customer to make those decisions for you. If you are not nudging them, then probably no. For example, I'll give you a very simple example from insurance, because a lot of people like Arun sir is sitting as an insurance expert. What is nudge in your case? I'll give you an example. Let's suppose someone came to him and saying कि सर मुझे ना एक SIP चाहिए and मुझे टर्म प्लान भी चाहिए, right? तो by setting a default कि सर अगर आप ये SIP लेते हो तो साथ में टर्म प्लान is already there. So you have a bucket of those things, is actually nothing but a nudge. You are enabling your customer, or you are nudging your customer by auto defaulting. So when you are going, जब आप एक सुपरमार्ट में गए थे या Zara's और H&M's of the world गए थे, लास्ट में जो लास्ट काउंटर था for ladies, usually it is makeup items which can be pick up quickly, and these are high value items. These are not like 10-20 rupees chewing gums. आपने 500 रुपए का टॉप लिया, you end up buying 300 rupees clutches. My wife did this yesterday. So that's how this example came. Nudge. They are actually nudging you. Setting up defaults, which I have explained. Placing bets on goal is a nudge. That if I will do, I will do this. If I will do, I will buy a Mercedes for myself. This is actually nothing but setting up goals for your nudging. So usually what happens, parents nudge us. So in a way, you also have to nudge your customer. So there is a very thin line separation between disturbing and nudging. But essentially, when you enable them to do themselves is nudging. Like rigorous follow-ups are not nudging, to be honest. अब बार कॉल कर, सर आपका रिप्लाई नहीं आया, सर रिप्लाई नहीं आया. Like for example, best example, real life, Vikas, sir, I buy my insurance from Vikas, by the way, that's also a testimonial. So on 15th, this was kind of getting renewed. He told me on 10th on WhatsApp, कि Ankush bhai, your proposal, you're getting, आपका renewal खत्म हो रहा है, please get it renewed. And he never followed up, technically. On 14th, he said, because next day is 15th, you will lose your, because, and trust me, he never called me. Because he knows that I'll not pick up. I'll not pick. Sorry. But I did this on WhatsApp. This is nothing but nudge. Correct? So thanks to this book, slightest suggestions are nudges. So this is the second last and most important, which Praveen sir has highly talked about. I want all of your focus on these 10 most important things, because आप यहां पर मेजरली यही करने आ रहे हो. और अगर आपने इसमें 10 में से आई विश 10 कर लिए, तो आई थिंक आपका प्रगति या किसी भी जगह पर जाना आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा एक अपर एज देने वाला है. सो आई विल गो क्विकली ऑल ऑफ देम. फ्लडिंग स्माइल. जब आप रूम में एंटर करते हो किसी से मिलने के लिए, किसी क्लाइंट से मिलने के लिए, तो स्लोली स्टीडीली आराम से अपनी स्माइल का
जो रेट है धीरे धीरे बढ़ाइए, उसको आई कॉन्टैक्ट करिए, सो दैट यू विल गिव पॉजिटिव वाइब्स. दैट्स फ्लडिंग स्माइल. डोंट गो. नो, इट विल नॉट वर्क. You have to understand the other person's side because you are new to them. आप नए हो उनके लिए. So second is quickly hands horse sense. चेस आप लोगों ने देखा है, समझते हैं आप चेस? उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है घोड़ा. घोड़ा कभी 2.5 कदम लेफ्ट चलता है, राइट चलता है, पीछे चलता है, बट वो क्यों चलता है? So there is no other player in whole chessboard who can function. That's a very unique proposition. Though every player in the or the move in the chess is very unique, but horse is a very different sense, and horse can make you win or lose. So what this theorem comes from there कि आपको जब कोई बात कर रहे हो, because this is all about how to talk to anyone, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन में you have to move with that communication or with that conversation. The next one is watch the scene before you make the scene. Imagine yourself. जब किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, किसी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं, वाई पीपल से दैट ओके प्लीज रिहर्स इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज वॉचिंग द सीन बिफोर यू मेक दैट सीन. किसी इंपॉर्टेंट प्रपोजल के लिए जा रहे हैं, यू हैव टू काउंटर, यू हैव टू प्रैक्टिस विद योर वाइफ, विद योर सन, विद योर डॉटर, विद योर कोलीग्स, बिकॉज अगेन यू आर वॉचिंग दैट सीन. क्या क्या हो सकता है उसके अंदर? इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होने वाला है. आई जस्ट कैन नॉट गो विदाउट वॉचिंग द सीन. आई कैन नॉट मेक द सीन. So please do that. The next is never negate the city, job title and thank you. Very important. आप सब जरूर करते हो, जिसको आप मेमोरी हुक बोलते हो. कोई इसका मतलब बता सकता है मुझे? Never negate the city, job title and thank you. Please give a guess जल्दी से. Never negate the city. आप लोग करते हो, मैंने बताया मेमोरी हुक. नहीं, कुछ और? Somewhere you are right. So never negate the city, job title thank you means कभी भी. Sir please. That means Sir you can sit please. That's fine. Whenever you're leaving, you should leave with a note जो बाद में वो याद रखे आपको. Correct. Somehow that's almost near to the right answer. So never negate the city, job title thank you means, quickly ma'am, I'll not take more than 2 minutes. कभी भी कोई आपसे पूछता है कि आप कहाँ से हैं, तो just do not give them a blank answer that okay I am from Agra, Delhi, Lucknow of the world. Please relate a memory hook with them so that they can build something in their subconscious mind that okay, जैसे अभी आपका example था ऐसे towing Bhagirath, again amazing guy, we know he lives in Ghaziabad. That's how we know his city, because that's a connection with city of Bhagirath and towing service and Ghaziabad. Same is for job title. If you're into insurance, just don't tell that okay I'm insurance. What is that you have to do is to create a memory hook. And the most important, never give a blank thank you. Always tell the other person why you are thankful for and what you are thankful for. That actually gives a lot of space in his mind that okay, this guy is thank you for this. The next one is the swinging spotlight, very important again. जैसे कि आप एक बहुत अच्छे कॉन्सर्ट में जाते हैं, लाइट स्पॉटलाइट की तरह आपके ऊपर होती है, तो give the other person always the bigger spotlight. Next, be a learner and a listener. Empty the tanks, facts versus emotion. बहुत इंपॉर्टेंट है. हम सब अपनी लाइफ में बहुत सारे एस्केलेशन फॉलो करते हैं, बहुत सारे कस्टमर्स की कंप्लेंट्स होती हैं, तो हम कहां बह जाते हैं बेसिकली? फैक्ट्स और इमोशंस में. कभी भी आप जब कंप्लेंट कर रहे हैं या आप कंप्लेंट रिसीव कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. यूजुअली जो इंसान बोल रहा होता है वो अपने इमोशंस बोल रहा होता है, वो फैक्ट्स नहीं बोल रहा होता. तो सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्टी द टैंक्स. उसको बोलने दो, उसको बाहर निकालने दो, उसको अपनी जो व्यथा है उसको आपके साथ शेयर करने दो, बिकॉज उसके क्या है वो मोस्टली, तो फैक्ट तो बाद में आएंगे. सो दैट्स हाउ इट्स इंपॉर्टेंट, बी अ लर्नर एंड अ लिसनर, बिकॉज इफ यू want to learn how to talk, you have to understand how to listen first. The next one is name shower. Repeat the name. This is because I just specifically kept this for phone calls, because आजकल हमारी बहुत सारी डीलिंग फोन कॉल्स या वीडियो कॉल्स पे होती है. So can I have liberty for next 5 minutes? Okay, thank you. So name shower. If someone calls me again and again, hi Praveen sir, how are you? So that name actually gives the impact because they live with their name for the life. Hi Mayank, how are you? घर पे सब कैसे हैं? Very good. Good. So that's something that name impacts. That's what the badges were given. The badges has no other preposition because mind cannot recall names, but if you can, that's the best one. The next one quickly is tracking. बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के सुख में दुख में, बिकॉज हमारा तो यार हमारे तो संस्कार, हमारी तो जो हम जिसमें बड़े हुए हैं वो किस लिए कि हम किसी के दुख में और सुख में साथ खड़े हो सके.
मैं आपको बहुत रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। आज से तकरीबन 4 साल पहले मेरे को एक किसी किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया कि दे गिव सम सॉर्ट ऑफ सर्विसेज, यू शुड ट्राई देम। They just took my details and damn every year on my birthday they wished me with simple WhatsApp message. I made sure after 5 years I gave them a check for a service. After 5 years. So don't think that this tracking will not make you lead everywhere. And it's a very small effort. Other thing is, which I will relate to tracking is, अगर आपके ऑफिस में कोई आता है, do not let them go without a cup of tea. ट्रैकिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट। फॉर दैट यू हैव अ गूगल कैलेंडर, पूरे साल का आप एक साथ लगा सकते हो, कोई डायरी मेंटेन नहीं करनी, फोन आपके पास है। आज मुझे पता लगा आपका बर्थडे एनिवर्सरी है, मैंने सेकंड के अंदर क्या किया, फोन में फीड कर लिया दैट एवरी ईयर आई विल गेट अ रिमाइंडर। सिंपल, नो एफर्ट, क्योंकि हम एफर्ट तो करना नहीं चाहते। ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स अ शैलो वर्क। देन यूज आवर मोबाइल फोन्स फॉर अ गुड यूज। करेक्ट? इज इट, आर यू विद मी गाइस? टिट फॉर wait tat. It's not like badla. Tit for tat usually is badla. Please don't take that. So it means if you're giving someone favor, please wait to ask for the favor from the other side. Please wait a little. Don't do that. Okay, I gave you this business. Oh, this is my give. Where is my ask? No. The last one is killer compliment. We all humans are actually want to have a good word. Thank you so much. Next and the next one is, of course, I'll fold my hands. This is not a book. This is actually a granth. This is something, uh, is everything, and the learnings I have got from Srimad Bhagavad Gita is as follows. I'll fold my hands before taking this up. I think the first and the important learning is feelings are, which actually we should apply to the business. Feelings are temporary. Don't take decision on that basis. Again, जब हम अपनी feelings के साथ decision लेते हैं ना, that becomes a very difficult part for us. I have to buy a home because I am living in a 2 BHK or a 1 BHK is a decision taken with feelings. जब आप सबने पढ़ा होगा, जब कृष्ण भगवान और अर्जुन का संवाद चल रहा था, तब अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो वो उसने क्या प्रैक्टिकली सोच के बोला कि मैं युद्ध हार जाऊंगा, या फिर ये सोच के बोला था माय फीलिंग्स आर नॉट अलाउइंग मी टू फाइट अगेंस्ट माय ब्रदर्स? सॉरी, इन बिजनेस usually it doesn't work like that. The next one quickly is from chapter 6, avoid decisions when in extreme emotions. बहुत थ्योरी अच्छी बताई है कि जब भी आपको लगे कि यार ये मुझे ना खरीदना है, जैसे हम गाड़ी लेने गए, 12 लाख की गाड़ी थी, ईवी का नया जोश चढ़ा। माई वाइफ इज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, थैंक्स टू प्रवीण सर फॉर having her in my life actually. So she said no, we will come tomorrow. I was with my checkbook, I was with everything. ये गाड़ी तो आज लेनी है, मेरा परसों बर्थडे है, ये कैसे नहीं लेनी? I was already having a car because I want to have an EV. मेरे को गुड़गांव जाना था, मुझे EV चाहिए। She said no, कल आते हैं, कल देखते हैं, let's do some more research. कल मैं बिजी हूँ यार, मेरा संडे है, I just cannot go. We'll go on. Of course, we do not get Monday to Friday, we get only Saturday, Sunday. So we're like, okay, Saturday. You won't believe that made me thinking more because I was in extreme emotion of being happy. What I did, just took time कि नहीं लेंगे, देखते हैं. So whenever you are in that phase, either you are too happy, you are too sad, just pause. In very extreme sad conditions, maybe you fire your employee who is very valuable. You can just ignore his or her mistake. So do not take decisions in extreme emotions. The last one is feel the fear and do it anyway. Move out of your comfort zone. I think self-explanatory. We have talked a lot more about. Gita also tells about that. कि जो basically आपका comfort zone उससे बाहर निकलो, युद्ध करो. Chapter 17, 28 श्लोक. Whatever is done without faith is useless. अगर आपको किसी सुप्रीम पावर में या फिर अपने आप में फेथ ही नहीं है, तो आई थिंक वट एवर यू आर डूइंग इज, आई डोंट नो व्हाट्स द पर्पस ऑफ दैट. द लास्ट वेयर आई सबमिट माई होल session here before I take the questions is something everyone knows. In English it says, am I focusing only on the results? In Hindi it simply says, karm kar aur. That's it, my time is over.
and that's the whole session. And I'm thank you, sir. Thank you. So this is my you guys can sit. I do not deserve that, so thank you. So I think